Assalamualaikum and welcome back to altX. This is your instructor Ahmed Afzal and today we're going to begin with wavefronts. Wavefronts के अंदर दो चीज़ें होती हैं, refraction and refraction, and these are very important. So first, before we go into like immense amount of detail, let's discuss it in the basics. Basically होता क्या है wavefront? एक imaginary line जो join करती है सिर्फ in phase points को. और इन फेज पॉइंट्स की डिस्कशन वी डिड इन द प्रीवियस लेसन, सो यू कैन चेक दैट आउट. मीनवाइल वेव फ्रंट्स कैन अंडरगो बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सही है. और वेव फ्रंट्स आइदर इन दोनों में से कोई होते हैं, या प्लेन होते हैं या सर्कुलर होते हैं. हमारा काम क्या है? प्लेन वेव फ्रंट्स को या तो रिएक्ट करवाना या तो रिफ्लेक्ट करवाना. वी कैन डू आइदर ऑफ द थिंग्स. लेकिन सवाल ये आता है हम इनको ड्रॉ कैसे करें. इट्स अ वेरी सिंपल टास्क. टू ड्रॉ देम यू नीड टू मेक देम perpendicular to the wave propagation या motion या oscillation, and you have to make it equidistant to each other. और equidistance कैसे कर सकते हो? वेवलेंथ तुम्हारी सेम होनी चाहिए, लैम्डा सेम होना चाहिए. सो हेयर वाज एन एग्जांपल आई गिव. ये मेरे पास एक सिंपल वेव मोशन है, एज यू कैन सी राइट हियर. आई एडेड सम वेव फ्रंट्स टोटली परपेंडिकुलर, लाइक टोटली इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर. उनका लैम्डा बिल्कुल सेम था और परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन. आई होप दिस इज क्लियर. Let's move on to basics of refraction. Let's talk about refraction. Refraction को हम बोलते हैं क्या है? Refraction क्या होता है? किसी चीज़ का wave का bend होना. A bending of a wave passing from one medium to another. Okay, ये होता है हमारे पास refraction का concept. और होती कैसे है, किस वजह से होती है? वी नो द वजह इज प्रिटी क्लियर, विच इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ. ओके, नाउ द थिंग इज, सीन ये है कि हमारे पास दो टाइप्स हैं, या तो डीप टू शैलो या शैलो टू डीप रीजन. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन विच विल डिस्कस, विच इज डीप टू शैलो रीजन. ओके, इसके अंदर क्या सीन होता है? क्योंकि वी आर मूविंग फ्रॉम समथिंग डीप टू समथिंग शैलो और लेस एनर्जेटिक, द थिंग इज वाटर वेव्स, द वेव फ्रंट्स विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो वेव लेंथ है इट विल डिक्रीज़, हमारी वेव स्पीड विल डिक्रीज़, एंड हमारा जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड. इट वोंट चेंज, इट विल रिमेन अनचेंज्ड. तो क्या सीन हुआ? वेवलेंथ कम हो गई, वेव स्पीड कम हो गई, फ्रीक्वेंसी रही कांस्टेंट. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज डीप टू शैलो रीजन. सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप्स ऑन हाउ टू रिफ्रैक्ट. सो नाउ बेसिकली आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा, बेसिकली आपको बोलेगा वेव फ्रंट्स हैं ये आपके सामने, कंप्लीट देम बिलो इन द शैलो रीजन. इसका मतलब जो वेव फ्रंट्स होगी वो आ रही होंगी डीप रीजन से एंड दे आर मूविंग टू द शैलो रीजन. तो व्हाट यू नीड टू डू इज फॉलो दीज एग्जैक्ट स्टेप्स. दीज स्टेप्स आर वेरी सिंपल टू फॉलो एंड विल सेव योर लाइफ. क्या सीन है? पहला ये स्टेप ये है कि सिलेक्ट एनी वन ऑफ द वेव फ्रंट्स. ओके, एनी वन ऑफ द वेव फ्रंट्स. और जहाँ पे वेव फ्रंट मीट कर रही है बाउंड्री को, यू हैव टू डू अ वेरी सिंपल टास्क विच इज ड्रॉ नॉर्मल. और जहाँ पे बेंड करनी है ना हमने वेव फ्रंट, वो करनी है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, और फिर हमने इन दी एंड सारी वेव फ्रंट्स को ड्रॉ कर लेना. सवाल है कैसे ड्रॉ करें? द आंसर इज़ वेरी क्लियर, पैरेलल लाइंस द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स. आई नो दिस again sounds confusing and all that stuff, so let's do a very simple practical example of refraction in shallow region. Okay,
So this is step number 1. मैंने क्या किया, I selected a wavefront. मेरे पास ये 4 थी, I selected this one. This is the deep region and we have to draw the shallow region. Okay, pretty simple. दूसरा scene क्या था, what happened is very simple. We selected the incident wavefront and then we drew a normal. अब उस normal ने हमारे लिए क्या मदद की, the normal helped us refract the wavefront away from the normal. As you can see, this was the incident wavefront. ये incident path था और हमने यहाँ पे एक normal draw किया with the help of a set square. You can use a ruler or a set square, but you have to make it exactly 90 degrees. हमने set square के through normal बनाया, then we refracted it away from the normal. और ये deep to shallow region हमने हमारी wavefront bend करवा दी. So let me mark the step. दूसरा step था normal बनाना और तीसरा step था refract करवाना. Now let's move on to the fourth and final step. Now this final diagram, let me explain this. क्या सीन हुआ, the selected wavefront, ये उसकी refraction है. This is the refraction for the selected wavefront. I'll like mark it properly here. ये हमारी selected wavefront थी और ये इसकी थी refraction. Okay. अब क्या सीन हुआ, we were told to draw them parallel. बिल्कुल मैंने यहाँ पे parallel draw कर दी, drawn them parallel, और इनका wavelength और इनका wavelength बिल्कुल same है. So that was it. This was a pretty simple process. This was step number 4, and the final one, we drew all of the wavefronts parallel to each other. कैसे की हमने, we basically took a scale, we measured and then we drew them again and again to make sure कि हमारी refraction complete हो गई. So I hope you have understood the following 4 steps. Now we'll move on to another type of refraction जो होती है shallow to deep region. हमने पढ़ ली deep to shallow region. Now it's time for shallow to deep region. So yeah, let's move on. Now let's move a wavefront from shallow to deep region. So let me write it down. Shallow to deep region. Okay, let's discuss. अब जा रहा है ये shallow to a deep region. इसका मतलब कि उसकी जो propagation है, it's now a bit more central. तो उसके से क्या होगा, हमारी जो wavefront है वो bend करेगी towards the normal. उसकी जो wavelength है that will increase, the speed will increase, but now the frequency will remain unchanged. Again, frequency will always remain constant while wave speed and the wavelength will always remain directly proportional. तो अगर wave speed भी increase हो रही है तो wavelength भी increase होगी. Hence, as you can see, the only thing constant is frequency. So these were the basics for shallow to deep region. Now let's discuss basic like steps in order to refract. The steps are generally the same. They're not that different. वो ये है कि हमने एक wavefront select करनी है, जहाँ पे wavefront boundary को meet करी है वहाँ पे हमने normal draw करना है. Draw normal and bend the wavefront towards, ठीक है, towards from the normal. और बाकी wavefronts को draw करना है, सवाल है कैसे, simple है, parallel lines to refracted wavefront. So these were the quick steps I covered. Now let's do them in a diagrammatical form. This is the first step. What we did, we had a wavefront given to us. हमने एक को select कर लिया, this one specifically. We selected this one and now we're gonna do refraction on it. Now look at this. What we did was we got an incident wavefront and then we refracted it towards the normal. What did we do? First of all, we drew a normal 90 degree straight shot perpendicular to the surface. What we did was simple. We made first an incident path, which was not possible because the mediums are changing. Hence, because we are moving from a shallow to deep region, the wavefront will bend towards the normal. और यही मैंने इधर दिखाया है. Okay, so yeah, that's it. I would recommend using a set square in order to make the perfect normal. So let me write down the steps. ये था step number 2
और ये था हमारा step number 3. So let's move on to the final step and make sure that we properly refract the wavefronts. As you can see in the final step, what we did was basically we got the selected wavefront and ये इसका जो refraction है जो दिखा रहा हूँ मैं, and what we did was make the same refractions but parallel. We made parallel lines to show the refraction, and indeed the wavelength was the same. They were equidistant and they were parallel. Okay, so that was it. That was basically refraction covered in a whole. दोनों type discuss कर ली, shallow to deep and deep to shallow. So yeah, thank you so much for watching this video. Now for a very quick summary in order for you to revise your concepts even easier. Thank you. Okay, so now for a very quick summary. Refraction in wavefronts हमें पता है होती है change in depth के through. हमें पता है deep to shallow region होते हैं हमेशा away from the normal and shallow to deep region होता है towards the normal. हमें पता है कि wave speed और lambda away from the normal bend होते वक्त decrease होते हैं. And meanwhile when we bend towards the normal they increase. So that were the main differences और ये MCQ के अंदर बहुत काम आने वाली है summary. So thank you so much for watching this video. Have a great day. I hope refraction in wavefronts के सारे point आपको understand हो गए होंगे diagrammatical form में भी. So yeah, that's it. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Allah Hafiz and see you in the next one.